So this is net cash cycle operating. Net cash cycle. This is the so the major components is inventory turnover ratio first. Inventory turnover ratio. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने बोला कि आप फोकस करें इन्वेस्टमेंट और आप फोकस करें रिटर्न. सो इन्वेस्टमेंट है एवरेज इन्वेंट्री, तो रिटर्न है आपका यहाँ पर कॉग्स. यानी इन्वेंट्री कॉग्स में तब्दील होना. कब तब्दील होगा? सेल करे तो तब्दील होगा, राइट. सो हाउ क्विकली दिस एवरेज इन्वेंट्री वी आर कन्वर्टिंग. ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द एनालिस्ट विल सी. यानी कब हो सकता है, क्विकली कब हो सकता है. यानी आपका जो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स है एवरेज इन्वेंट्री में वो लो होना चाहिए. इफ दिस इज लो, योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गो आउट. कंपनी का पूरा इफिशिएंट कब बोलते हैं कंपनी? व्हेन द एफिशिएंट टर्नओवर. कॉग्स तो कांस्टेंट होता है, राइट. और अगर आपका ये इन्वेंट्री फास्टली मूव हो रहा तो कॉग्स विदाउट आई मीन टू से additional assets or without going to other markets, एक्सपेंशन के बिना पर भी आप क्या कर रहे हैं? जल्दी बेच रहे हैं, फिर जल्दी इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, फिर जल्दी बेच रहे हैं, जल्दी कन्वर्शन. सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? विदाउट फर्दर एक्सपेंशन टू द मार्केट्स यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट. एंड आपका एवरेज इन्वेंट्री क्या हो रहा? एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा, क्योंकि आप जल्दी 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 जल्दी. एवरेज इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इन्वेंट्री रियलिटी में? यानी whenever you go and knock the door, knock, so what is the stores manager को पूछते हैं what is the inventory balance? वो बोलता है कि 50,000. फिर जाए, फिर पूछें क्या है? 50,000. फिर पूछें 50,000. एवरेज इन्वेंट्री का मतलब रियलिटी में 50,000 नहीं होता है. कभी 50,000 होता है, कभी 60,000 होता है, कभी 65 होता है, कभी 44 होता है. ये 12 महीने का पूरा निकाल के जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज इन्वेंट्री आएगा. एंड डेटा इज नॉट अवेलेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी मंथ इन्वेंट्री. इसीलिए हम बिगिनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेकर डिवाइड बाई 2 करते हैं. दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री डजंट मीन एक बैट्समैन खेलने जा रहा है, सचिन तेंदुलकर इज गोइंग, विराट कोहली इज गोइंग, तो उसका एवरेज देखते हैं. क्या बैट्समैन का एवरेज है? यार इसका एवरेज जो है ना 75 है. अब मिनिममली ये जो है ना 75 मारेगा ही मारेगा. उससे बढ़ के भी मारता है, उससे कम भी होता है. सो ही विल मेंटेन एन एवरेज. एक जितने मैचेस जो खेलते हैं 10 मैचेस में उसका एवरेज मेंटेन करता है. सो एवरेज इन्वेंट्री मीन्स at any point of time when you visit the organization, the company, how much of inventory it is managing, that is the average inventory. आपका एवरेज इन्वेंट्री कम है मतलब यू आर क्विकली कन्वर्टिंग इट इनटू द सेल्स. दैट्स द कॉन्सेप्ट. और एक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लॉकेज ऑफ फंड इज मोर होगा, आपका बहुत ज्यादा होगा, तो आप जल्दी से इसको यू आर नॉट कन्वर्टिंग टू कॉक्स. व्हेन यू आर नॉट कन्वर्टिंग टू कॉक्स मींस योर वेटिंग पीरियड इज मोर. सो दैट मींस आपको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी. efficiently you are not using your asset. Not only fixed asset, your current assets also you have to use the efficiently, and that is what the concept of this. यानी अगर आपका 2 times है, सॉरी एक 5 times है अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, that means $1 of inventory is generating $5 of COGS. That is very important. If one company COGS are 2 million and 20,000 is his average inventory, so 10 times. So this is company, यहाँ A का 5 है, यहाँ B का जो है ना 10 है, तो ये भी 2 million है, लेकिन यहाँ पर 40,000 आ रहा है. So it is coming 5 times and it is coming 10 times. Which organization is best? This organization is best because it's converting uh, uh, its inventory very fastly to the COGS, very fastly to the sales. When it is fastly converted to the sales, so आप फास्टली भी कैश कन्वर्ट करेंगे, यानी बेचेंगे लाएंगे, बेचेंगे लाएंगे, बेचेंगे लाएंगे, बेचेंगे लाएंगे. In this way, that is what we need to focus on.
सो दैट्स वाई, वही वही तो है ना, टोटल एसेट टर्नओवर भी वही देखते हैं। $1 ऑफ एसेट हमारा कितना सेल्स जनरेट करता है, तो $1 ऑफ इन्वेंट्री कितना कॉग्स जनरेट करता है। जितना ज्यादा करेगा उतना एफिशिएंटली यू आर यूजिंग योर एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाट द concept of inventory turnover ratio. Then you talk about the accounts receivable turnover ratio, accounts receivable turnover ratio. So investment and return. Okay. So then in that case, investment is accounts receivable. हम हमने इन्वेस्ट किया अकाउंट्स रिसीवेबल में, और ये अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट क्या करेगा, सेल्स क्रेडिट, सेल्स करेगा, credit sales. So this is the formula. Average accounts receivable by credit sales by average accounts receivable. What does it mean? Don't block your funds in accounts receivable more. If you are blocking more, this denominator is more, so your accounts receivable turnover ratio will decrease. When this is decreased, that means you are not efficiently managing your accounts receivable, यानी आपका कलेक्शन स्लो है, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। ओके, यू आर नॉट encouraging your customers to pay cash quickly. These all things does matter. These all things does matter. So blockage of funds ज्यादा नहीं होना चाहिए. So that means this always will keep this try less. So when we are keeping trying less, so your accounts receivable turnover ratio will increase. मतलब कि अगर आप एक कंपनी ए का जो है आपका $1 यहाँ है और यहाँ $5 है, कंपनी बी का $1 यहाँ है, 8 है, तो हु इज कन्वर्टिंग फास्टली द अकाउंट्स रिसीवेबल टू कैश कलेक्शन, कौन जल्दी कर रहा है, तो कंपनी बी इज डूइंग मोर कलेक्शन बिकॉज it is having low accounts receivable, generating more credit sales, यानी ज्यादा, यानी पूरा माल बेच दिया 2 महीने में, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा। एक कंपनी जो है ना 4 महीने ले रहा है, इट टेक 4 months, तो इन दैट वे। तो दैट इज द थिंग, आप 3 तरीके से याद कर सकते हैं: इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, blockage of funds more, non-efficient, your turnover will decrease. That means $1 is generating only $5 of credit sales. Here, $1 is generating $8 of this thing. 3 तरीके से आप जो है इस फार्मूले को समझ सकते हैं. This is what the concept of accounts receivable turnover ratio. So then third क्या है, accounts payable turnover ratio. Accounts payable turnover ratio is nothing but what? What is your investment? Your investment is accounts payable. And what is your return? Your return is credit purchases. ये है आपका, राइट? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम डिले करते हैं। डिले इन्हें देते वक्त थोड़ा देर से देंगे, लेते वक्त जल्दी लेंगे, कन्वर्शन इन्वेंट्री जल्दी करेंगे, तो क्या होगा आपका, से अकाउंट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका ज्यादा है, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका ज्यादा है, लेकिन अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो आपका कम है। कम यानी व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू आर ब्लॉकिंग फंड्स हियर मोर। अकाउंट्स पेएबल ज्यादा ज्यादा रखते हैं आप, अकाउंट पेएबल मतलब कि आप जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सो इट डजंट मीन दैट आपके रिलेशंस खराब कर लें, देन दैट इज ए क्रेडिबिलिटी लॉस। विदाउट लूजिंग क्रेडिबिलिटी, नेगोशिएशन पे इंटेंशनली एक एक दिन डिले करना, 2 दिन डिले करना, या चेक लिख के देना, या चेक थोड़ा सा गलत लिख के देना, ये गलत है ये पूरे, बट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं ऐसा। वैसा नहीं करना चाहिए। बट जब हम बात ही करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली हम क्रेडिट ज्यादा लेते हैं और हमारे कस्टमर को क्रेडिट कम देते हैं, वैसा रखना चाहिए। सो इन दैट वे, सो म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर हो रहा है, that is well and good. Otherwise, you agreed for 30 days and you are making payment 40 days, 1 day, 1 month, 2 months, 3 months, okay. But every time you are doing, you will be losing credibility, and that is not good. That is very important. Okay. So therefore, finally, what is the formulas? One is inventory turnover ratio. Another is accounts receivable turnover ratio. Another is accounts payable turnover ratio. Right. Another is fixed assets turnover ratio.
Another is total assets turnover ratio. Total assets turnover ratio, right? ये पूरों को मिलाए तो आपको क्या आएगा? Total assets automatically. Asset turnover ratio. So inventory turnover ratio का फॉर्मूला क्या है? सिंपल. इन्वेस्ट रिटर्न बाय इन्वेस्टमेंट. रिटर्न क्या है हमारा? कॉक्स. इन्वेस्टमेंट क्या है? एवरेज इन्वेंटरी. Here is what? Investment is accounts receivable. Average accounts receivable. What is it? Net credit sales. Net credit sales. Here is what? Investment is what? Average accounts payable. Investment is what? Net credit purchases. Here is what? Here is what? Sales. Other than current assets है तो वो sales आएगा. So total sales. यहाँ fixed assets. Average fixed asset. यहाँ क्या होगा? Total sales divided by total average total fixed assets. Sorry, total assets. Average total assets. This is what the concept. What is the average inventory concept? Beginning inventory plus closing inventory divided by 2. We cannot calculate every month, no? And here is what? Beginning credit sales plus, sorry, beginning accounts receivable, ending accounts receivable divided by 2. Here is what? Beginning accounts payable plus ending accounts payable divided by 2. This is the formula. This is the formula for this. This is the formula for this. यहाँ एवरेज करने की जरूरत नहीं है. अगर कर जरूरत पड़ रही तो कर लें. दैट इज कर लें, बेहतर रहता. एवरेज बिगिनिंग fixed assets plus ending fixed assets divided by 2. Beginning total assets plus ending total assets divided by 2. This is the formula. Is this clear to all of you? Do you have any doubt? Yes, please. Any doubts? Are clear? Clear. Clear. Very good. So now the point is what? अभी हम डिस्कस करेंगे one more formula in days. Okay, let's take example. Let's take example. Inventory turnover ratio formula is what? COGS by average inventory. Let's see company A, B information. Company A information, COGS by average inventory. COGS by average inventory. Company A, COGS are 2 million and average inventory is 40,000. Company B, 2 million and average inventory is 20,000. Now tell me, what is this inventory turnover ratio? Here, 5 times. Here is how much? 10 times. Now tell me which company is good. And why? Which company is good and why? Company B. Why? Because the inventory is more liquid, fasterly liquidated than the company. Correct. It is selling more inventory Correct. compared to 5 times higher than the company. Correct. Very good. So here the important point you have to understand is that the blockage, कहीं भी जाओ आपके पास इन्वेंट्री कम रहेगा. That means the blockage of funds in inventory is low. What do you mean by that? Means you're fastly converting inventory into sales. You're converting your inventory fastly. That means company B
is fastly converting, company B is fastly converting its inventory into the sales. Efficient. Company B is efficient. If inventory turnover ratio is more, means company B is efficient than the company A. Than the company A. So what is the exactly the concept of inventory turnover ratio? Inventory turnover measures the efficiency of inventory management. Higher the turnover, better the inventory is being managed. So how exactly it is going to be happen? Means you're quickly converting your inventory to the sales. You're converting your inventory to sales. That means here in another way we can say 10 by 1, 5 by 1, $1 of inventory generating $10 of COGS. $1 of inventory generating $5 of COGS. So now you tell me which company is good? B is good in that context also. So now what I am doing for 12 months, or for 365 days, company is taking inventory converting 5 times. If 5 times is converted to 365 days or 365 days, it's converting, क्या कहते हैं? Okay, we can say like this: 5 times taking 365 days, 1 time it is taking how many number of days? That means 1 into 365 by 5. बोलिए कितना आ रहा? 73. 73 days. So can I say inventory company A is converting 5 times its inventory to sales? Can we say in how much period it is one slot of inventory converting in how many days? एक बार अगर इन्वेंट्री का स्लॉट खरीद के लाए, आपका ऑर्डर क्वांटिटी खरीद के लाए, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब आप खरीद के ला रहे हैं तो कितने महीने में बेच रहे, कितने डेज में बेच रहे हैं? हाउ मेनी डेज यू आर टेकिंग टू कन्वर्ट that inventory? How many days that inventory is staying in your stores? Means इसको कहते हैं in this way: 5 times in a year it's converting inventory 365 days, right? So 5 times के लिए 365 days ले रहा है. 1 time inventory convert करने के लिए कितना ले रहा है? Means what? 365 by 5. 360 by 5 means what? How many days you are taking? 73 days. Company A is taking 73 days to convert into its inventory to sales. Now, could you please tell me how many days one slot or one order, economic order quantity, एक economic order quantity आपका convert करने के लिए यहाँ कितना टाइम ले रहा है? ये कंपनी 36.5. 365 by 10 means 36. 36.5. Is taking how many days? Company B is taking how many days? 36.5. 37. Which company is good? Days point of view से calculate करेंगे. B. B. See, now compare these ratios. Compare these two ratios. एक रेशियो बोल रहा है in a times ratio is telling, and days ratio is telling that company A is taking 5 times and it is taking 73 days. Company B is taking 10 times, it's converting its inventory to sales 10 times, double the company A. So that means what? 36.5 days it is taking. मतलब कि क्या है?
higher turnover ratio is a good indication, is equal to what? Equal to lower lesser day. days. ये याद रखना है आप। एग्जाम में आपको ये भी देगा, ये भी देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा। ये भी हायर है तो ये भी हायर रहना नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इनवर्स रिलेशन। ए कंपनी इज एफिशिएंट, what is the definition? It must have higher turnover ratio, assets turnover ratio, either current asset or fixed asset, whatever it may be. Or we can say the same thing, the blockage of funds in that asset should be lower in number of days. That is also efficient. Company is efficient. That company is also efficient company. Are you getting my point? All of you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये फिर ये क्या है? ये फार्मूला क्या है आपका? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो can be calculated in two ways. One is in times, another is in days. Another is in what? Days. When we are calculating times, COGS by average inventory. Then days, formula क्या है? Days in inventory. यानी कितने days हमारा inventory है? Days in a year, 365 or 366 depend. Days in a year, you are writing exam in 2025, so days in year 2025 leap year है नहीं है वो चेक कर लेके आप लगाना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वही करें ना हम लोग। 365 by 5 टाइम्स लिए, 365 by 10 टाइम्स लिए। दिस इज व्हाट? days in a year by inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio, this is the formula. This should be higher, the days should be lower. That both are same. Turnover ratio higher means days, the funds blocked in that asset should be lower. Then this is a efficient. It is using efficiently. Good position. Same way, in the same way we will calculate what? In the same way we will calculate what? Accounts receivable turnover ratio. Accounts receivable turnover ratio can be calculated in two ways. Accounts receivable turnover ratio can be calculated in two ways. One is times, another is days. तो times formula क्या है? Times formula क्या है? Return. Return is what? For accounts receivable, credit sales. Net credit sales divided by average accounts receivable. This is the information in times. फिर यहाँ क्या होगा? Days sales outstanding in receivables. Days sales outstanding in accounts receivable. Nothing but what? What is the formula? बोलिए 365 days. Days in a year. Days in a year. Leap year को 366 होता है, 365 नहीं रहता। Days in a year लिखो formula में, और 365 और 366 as per the 4 years, 4 से multiply हो रहा तो leap year है, 4 से multiply नहीं हो रहा तो it is not the leap year. That is the case. So days in a year divided by what? Average accounts receivable turnover ratio. Accounts receivable turnover ratio. This is the formula for accounts receivable. Two formulas are there. Times का formula ये है. What is the meaning of this? यानी if this 10 times is taking 365 days, one time के लिए कितना? 1 into 365 divided by 10. ये भी formula by heart नहीं कराने लगा मैं आपको, logically समझा. So when you go to the examination hall, you go with free mind. Apart from Dari Academy, those who are going for examination, लंबे लंबे फार्मूला के शीट्स लेके जाते हैं. दारी एकेडमी के स्टूडेंट्स हंसते हुए जाते हैं. एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं ऐसा, कैसा रहता बोलते? हाँ सलमान भाई, कैसा रहता? जबरदस्त।
So this is what the concept of accounts receivable. Then accounts payable turnover ratio. As accounts payable turnover ratio, two formulas. One is times, and then another is what? Days. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अकाउंट्स रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल? नेट क्रेडिट सेल्स, sorry, purchases by what? Average It's payable. accounts. Average. Average accounts payable, right? फिर पेबल्स का क्या आएगा यहां पर? डेज का बोलिए. व्हाट शुड बी? डेज इन ए ईयर बाय अकाउंट्स पेएबल Turnover ratio. रेशियो. इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू से? क्या बोलते हैं? डेज परचेजेस इन अकाउंट्स पेएबल. डेज परचेजेस इन अकाउंट्स पेएबल. अब बताइए, डेज इन डेज सेल्स, डेज सेल्स, okay, days sales in accounts receivable are 70 plus. Days sales in inventory is 50 is equal to how much? 120 days. This is your operating cycle. From the operating cycle we are deducting accounts payable days. Days in accounts payable minus करेंगे. So 120 minus 100 days. What is your cash cycle? कैश साइकिल क्या है आपका? 20. 20. दैट मीन्स इन एवरी 20 डेज आपका कैश बाहर जाता, फिर कैश वापस आता 20 डेज. मगर ये 100 नहीं रहता जनरली. ये 70 है तो उसका मतलब ये 80 रहता, उससे ज्यादा नहीं देते कोई. 120 minus 80, so 40 days. That means inventory to cash is taking, after considering the credit what we have taken, in 40 days कैश टू कैश कन्वर्शन है. यानी एक कैश फिर कैश बनने के लिए 40 डेज लेता है. एंड दैट इज व्हाट द कैश साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू डेज सेल्स इन इन्वेंट्री प्लस डेज सेल्स इन अकाउंट्स रिसीवेबल. This is the operating cycle. Then cash cycle is what? Cash cycle is nothing but operating cycle minus days in payables. Days in payables. Okay. करें तो आपको cash cycle आता. That's the thing. Is this clear to everyone or do you have any doubt? All of you. Clear.